अच्छा देखो, time and work. So in this chapter you will meet time. Time may be day, week, month, year, hour. Work means anything. So mostly these chapters belong to the workers making some building, worker making some bridge, workers making some wall like this. Okay, and this chapter is used to make some very good software in the civil engineering and the construction work. This is very fantastic. Okay, so who work? Person works. Workers works. So there are the three: time, work, and person. So I'm giving you the first very fantastic concept, that number of person required to complete a work, number of person is inversely proportional to time to complete the work. All are inversely proportional. More person, less time. Less person, more time. Okay, more workers, the time will be less. Less worker, time will be more. 20 man can complete a work in 40 days. So can you write one man complete the work in कितना? बोलो जल्दी से बोलो. बोलना है मैथ्स में तो. अच्छा तो 20 मैन आए और 40 डेज में काम किया. 40 डेज मतलब 1 मंथ और 10 डेज. और 1 मैन आया और उसने 2 डेज में काम कर दिया. रजनीकांत है क्या? इसी रजनीकांत 2 डेज में कर देगा. और 20 मैन took the 40 days. So my math is wrong. This is wrong. No. It will not happen because the relation is the inversely proportional. So I am teaching this chapter. This chapter is not simple chapter because the relation between the number of person and time is the inversely more person, time less. So you cannot apply the unitary method. So one man complete the work in not divide. You have to multiply 40 into 20. One man will take the 800 days to complete the work. Okay. So generally we use the symbol for number of person as a m and time as a d. So generally we can say that time and number of person is always constant in the exam, and not in exam, in any cases. So simple, I am writing here number of person, I am writing here as a m and time is the d. The product of m and d is always constant in the mass. More man, less time. Less man, more time. Okay, 20 मैन कंप्लीट द वर्क इन 20. अच्छा था 20 की जगह अगर मैं 5 मैन ले लेता, 5 मैन सेम वर्क. सो यहाँ पे कितना 800 चाहिए, तो कितना होता 5 1 जा 5, 160 डेज में कंप्लीट करते हैं. अच्छा मैं सिर्फ 1 मैन ले लेता, 1 मैन तो कितने दिन में करता, 800 डेज में कंप्लीट करता. और मैं 800 मैन ले लेता तो 1 डेज में कंप्लीट हो जाता. तो इनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट. द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा समटाइम वी यूज द डी मीन्स टाइम. सो कई बार टाइम में पर आवर्स भी यूज में आता है. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने 5 डेज में वर्क कंप्लीट किया बट दे आर वर्किंग 8 आवर पर डे. सो समटाइम वी यूज द टाइम एज ए डे एंड per day hours. So it is time. We use the time as a 40 hours. If I complete the work in 5 days, working 8 hours per day, so I can multiply and I will get the 40 hours. So generally, I'm going to change this formula, and it's very beautiful formula. Man, D, and H product is always constant in the mass. I'm giving you simple concept. So in the mass, the product of person, days, and hours are constant. What is the use? I will tell you the use. Stop. Okay. So is there any doubt in the first concept? Number of person is inversely proportional to time, means inverse relation. Okay. So in the mass, I will use this concept directly. If in any question it is given that 5 man complete a work in 12 days, and I want to find out in how many days one man can complete the work. So I can directly write this relation with the
Simple concept that the number of person is the inversely proportional to days. Achha, sometimes the time of one man is given. One man complete the work in 18 days. It is given, and you want to find out in how many days three men can complete the work. So you can write directly. What is the answer? I can write directly relation because I know that person less, days more. So don't divide, multiply. So I can use this relation. Now in this chapter, I will use directly this relation. Directly. 5 man, 12 days. So 1 man, not divide, multiply. Don't apply unitary method in this chapter. It is the inverse. You have to apply the opposite unitary method. Same thing. Time of 1 man is given 18 days. अच्छा देखो, main more, days will be less. So it will become 18 by 3. This is 6 days. Even you can use this relation in here also. You can write the M1 D1 equal to M2 D2. M stands for 5 man. Complete the work in 12 days. M2 means 1 man in how many days? You can directly use this relation. Very interesting, very interesting. The product of man and time is always constant in the maths. Same thing you can use here. M1 D1 equal to M2 D2. I can use this. 1 man complete the work in 18 days. Same work. I'm talking about the same work. Same work completed by 3 men in how many days? You can see that. You will get the 6 days. Acha. Okay, it is the first relation. I think it's good. Don't worry. I will tell you. I'm writing the second relation. So in total chapter, I will use the two formula. One is the MDH masala. MDH masala, this is the formula of MDH masala. MDH is always constant. Second is the LCM method. Only two method. ठीक. वैसे यूनिटरी मेथड में क्या करते हो? अगर मैं 1 डे 5 रसगुल्ले खाता हूं तो 6 डेज में कितना खाऊंगा? 5 into 6 मल्टीप्लाई नहीं करते हो? 1 का पता होता है and if you want to find out for 3, so you multiply in unitary method. Generally, in 1 day I eat 18 rasgulla. So in 3 days, how many rasgulla? 18 into 3. But in this method, in this question, you have to divide. Means reverse of unitary method. पूरा unitary method का reverse करना है. If you forget, don't worry. Man more, definitely days will be less. Or you can use this direct formula. M1 D1 equal to M2 D2. Very nice. You can use the direct formula. ठीक है. अच्छा, second concept देखते हैं क्या होता है. Work या फिर कार्य, आई एम राइटिंग द हिंदी आल्सो, प्रोपोर्शनल टू टाइम, समय के समानुपाती होता है. कार्य समय के समानुपाती होता है. वर्क प्रोपोर्शनल टू टाइम मींस मोर टाइम मोर वर्क, लेस टाइम लेस वर्क. वो तो सीधी सी बात है. सो आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल. अच्छा देखो, अब यहां पे क्या करोगे आप? ए कैन कंप्लीट 2/5 वर्क in 12 days. But generally I'm taking just introduction of this chapter. So introduction से जो आएगा वो आप देखना, बहुत interesting, very interesting. A can complete 2/5 work in 12 days. ठीक है. So A can complete 2/5 work in 12 days. It is written there, है ना? So A can complete 1 work in. अच्छा, if 1 work निकालना है, you can use a unitary method. यहाँ पे सीधा relation है. More work, more time. 12 by 2/5. 2 से गया 6 and ये हो गया 30 days is the answer of this question. ठीक है, ज्यादा टेंशन मत करो. देखो, मैं आपको ना इन सब का सार बता रहा हूँ. वर्क मीन्स W proportional to time. Time means D or H, no problem. So both are inversely proportional. Okay. So the concept number 1 and 2, I am combining, and I am writing the very, very fantastic formula that M DH divided by W is always constant in the maths, and you can get a lot of question of this. MDH by W is always constant in the maths. What it means? So now we will use frequently this formula in our
questions M1 D1 H1 upon W1. It is information of one group. 20 workers by working 8 hours per day complete a work in 13 days like this. So write the all data. ठीक है. अच्छा आपसे पूछा है in how many days 60 worker by working 3 hours per day complete double of the work, 2 1 and 2 like this. So I will use मैं example दूंगा आपको. So please remember this formula only. So it is your first concept of this chapter. देखो अभी मैं आपको दूंगा, we will do a lot of questions, हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन. ठीक है. तो ये आपके पहले दो कॉन्सेप्ट है बस. लीव more work more time, less work less time, more person less work and less person more work. ठीक है. चलिए. Okay, I'm writing the third concept and the last concept. One day work. If you one day work equal to 1 upon days. एक दिन का कार्य होता है 1 upon days. इसका मतलब क्या है देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला, आई टोल्ड यू दैट कि एक बुक है परीक्षावाणी, एनवायरमेंट की बुक है. मैंने कहा बच्चा उसको पढ़ना है आपको, है ना. सो आपने बोला कि सर मैं उसको 40 डेज में पढ़ लूंगा, है ना. एक बुक है बहुत ही प्यारी सी, एनवायरमेंट की बुक है. सो पुस्तक महल पब्लिकेशन है, एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट. तो आपने बोला कि सर आई विल रीड इट इन 40 डेज, मैं इसको 40 डेज में पढ़ लूंगा. आई विल कंप्लीट दिस बुक इन 40 डेज. ठीक है. सो आपका वन डे वर्क डन कितना होगा? व्हाट इज द वन डे वर्क डन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वन डे वर्क डन? आपने एक दिन में कितना कितना पढ़ा? 1 upon 40. अच्छा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आई विल यूज दिस कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चंस. ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे. क्वेश्चन इतने सिंपल है, मजा आ जाएगा. 1 upon 40, मैं एक दिन में उसका 1 upon 40 पार्ट करूंगा, अगले दिन 1 upon 40, then 1 upon 40, then 1 upon 40, then 1 upon 40 और 40 डेज में पूरी कंप्लीट कर दूंगा. गॉट इट? सो इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वन डे वर्क डन ऑफ एनी पर्सन, वो होता है 1 upon टोटल डेज. बस. ठीक है. ये मजा आया नहीं? मजा आया, सिंपल है. ठीक है. ओके. नाउ मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डेज, सो इट इज 1 upon 1 वन डे वर्क. ये दोनों मैंने कॉन्सेप्ट कब लिखे? व्हेन, अच्छा अभी आपको सब समझ में आएगा जब व्हेन आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन. व्हेन टोटल वर्क, आई एम अज्यूमिंग द टोटल वर्क इक्वल टू 1. इफ आई अज्यूम द टोटल वर्क इक्वल टू 1, देन आई कैन राइट वन डे वर्क डन इक्वल टू 1 upon डेज. ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल, इस बुक में टोटल 500 पेजेस है. सो आई कैन से दैट 40 डेज में मैं 500 पेजेस पढ़ रहा हूँ, तो एक दिन में 500 by 40. ठीक है. सो समटाइम व्हेन टोटल वर्क इज द 1, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. वन डे वर्क डन क्या होता है? 1 upon डेज. मैंने पूरे वर्क को 1 माना है. ठीक है.